So what is threshold energy? Threshold energy is the certain minimum amount of energy required by all the reactant molecules to make their collision effective or to form the product, or which must be possessed by the reactant molecules. So threshold energy. I am writing the definition. The certain minimum amount of energy, required or which must be possessed. The certain minimum amount of energy required by all the reactant molecules, to make their collision effective, so that product can form. Is called threshold energy. The certain minimum amount of energy required by all the reactant molecules to make their collision effective, so that product can form, which called threshold energy. So this amount of energy is most required, must be possessed by all the reactant molecules to form the product. Then activation energy. Activation energy बोले कण the extra amount of energy which has to be supplied, which has to be supplied to the reactant molecules, to make their energy equal to the threshold energy. So that the collisions become effective and product can form. It's called activation energy. So in order to make the molecules activate, activation energy is supplied. तो जेन मॉलिक्यूल मानकर एनर्जी ताकर ओन एनर्जीटा थ्रेशोल्ड एनर्जी संगे समान नहीं हुए तो हमको बाहर एनर्जी देबार पड़वा. बाहर एनर्जी देले कण हेबा समान एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी संगे समान हो जाबा. तापर से माने इफेक्टिव कोलिजन देबे आउ प्रोडक्ट फॉर्म करबे हला. तो 100% प्रोडक्ट पावर लगे हमको सब मॉलिक्यूल मानको एक्टिव करबार पड़वा और एक्टिवेशन एनर्जी देबार के पड़वा. तो एतरो में जानला जेन रिएक्टेंट मानकर एक्टिवेशन एनर्जी कम है से मानकर रेटटा फास्टर है, से माने जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करबे. जेन मानकर एक्टिवेशन एनर्जी बेसी है से माने स्लोली रिएक्ट करबे, काहे से मानकर एक्टिवेट करे पड़ा एनर्जी देगरी तो से मानकर रेटटा स्लो हो जाबा. जेन माने ऑलरेडी तमने थ्रेशोल्ड एनर्जी पोजेस करे जन तो से माने लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर करबे. तो जेते से माने लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर करबे से माने जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होबे हला. तो लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर रेट. हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर रेट. रिएक्शन रेट एकदम स्लो हो जाए. तो एक्टिवेशन एनर्जी तमने लो अच्छे तो जो कम एक्टिवेशन एनर्जी दरकार तो आम जाना रिएक्शन फास्टर रिएक्शन हो जाए. जो
जदि एक्टिवेशन एनर्जी हमको बेसी देबार के पड़ुचे हम जानला रिएक्शन स्लो हो जे ताले हम दउजु एक्टिवेट करले मोलेकुल को ओके। Now I am going to explain this completely through a graph. Suppose this is y-axis, this is x-axis, this is progress of reaction, this suppose this is reaction, reactant and product, reactant product and product, and in this axis this is energy, increasing order of energy, and this is progress of reaction. And suppose this is the reactant, is the product, this is the energy of reactant, and this is the energy of product, and we know the product always possesses the lesser energy than the reactants. This is the own energy of reactant, and suppose this is the energy barrier, the threshold energy value, which must be possessed by the reactant molecules in order to make their collision effective. So reactant molecule मान को एतकी दूर आसपारी पड़वा, ये बैरियर के पास करबार के पड़वा, इनके आसबे तापर से माने हाईली एनर्जेटिक इनके आसबे तापर से माने अनस्टेबल हे करी तापर एनर्जी रिलीज करबे आ प्रोडक्ट फॉर्म करबे। तो पहला रिएक्टेंट आइनो थिबा तार ओन एनर्जीटा, तो ताको हमको कोलिजन को इफेक्टिव करबार लागि मान को इनके आसपारी पड़वा आसीगला तापर माने ग्रेजुअल तापर एनर्जी रिलीज होबा आ से प्रोडक्ट फॉर्म करबा। So this is the energy of reactant. I can write ER, energy of reactant. This is the threshold energy, energy barrier, threshold energy, ETH. तो रिएक्टेंट के आउ ये कण है रिएक्टेंट का एतकी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करी करी ताकि तार एनर्जी का थ्रेशोल्ड संगे समान करी जो रिएक्टेंट एनर्जी न एतकी एनर्जी मिसले गिर तार एनर्जीटा थ्रेशोल्ड एनर्जी संगे समान हवा। तो ये द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सप्लाई करे पड़ला, ये जन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सप्लाई करे पड़ला दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which has to be supplied to make the energy of reactants equal to the threshold energy is this. So this is the activation energy. So from this graph energy of reactant plus activation energy is equal to threshold energy. Got the point? So this is the point. This is the point. This is reactant, this is product. So this is here the collision theory is also can be explained. According to collision theory, molecules collide with one another to form the product, and all collisions do not result into product, only effective collisions result into product. So the reactant molecules possessing the threshold energy only show effective collisions, and in order to make the energy of reactants equal to threshold energy we have to supply some certain extra amount of energy, that is called activation energy. This is all about the collision theory. And इन काण हवा मोलिक्यूल माने एक्टिवेशन एनर्जी पाई सारला परे से माने हाईली एनर्जेटिक हे जिवे, हाईली एनर्जेटिक हेगले काण हवा से माने इन गोटे हाईली एनर्जेटिक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करबे।
तो से हाईली एनर्जेटिक आउ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करबे बिफोर गोइंग टू प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्टेंट थिला तापर से गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कला तापर से प्रोडक्ट फॉर्म होला। ये कॉम्प्लेक्स के आम कहसु इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कला बोली कहूँ। आ गोटे हाईली एनर्जेटिक तार एनर्जी बहुत अधिका और अनस्टेबल है तो से स्टेबल केमती करवा एनर्जी लूज करवा एनर्जी तमने से धीरे धीरे डिक्रीज करवा आउ प्रोडक्ट फॉर्म करवा। तो इटा के आम कहसु एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आ गोटे कहसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहसी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन बोले काना रेक्टेंट से काना है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है तापर से प्रोडक्ट फॉर्म। तो ट्रांजिशन है गोटे स्टेट और गोटे स्टेट के तो आम कही पार्मा दिस इज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे थ्योरी के कहसी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। तो इन गोटे हाईली तो जो यहाँ रिएक्टेंट हो सपोज ए हो प्रोडक्ट हो बी तो इन गोटे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से फॉर्म करवा हुई हाईली एनर्जेटिक। तो आम क्या कहला जदि ए रो प्रोडक्ट बी हो तो बिफोर गोइंग टू दिस प्रोडक्ट एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड। ए रो क्या पहला गोटे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तापर से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आउ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट रिवर्सिबल तो एनी टाइम ये इनके कन्वर्ट हो पारवा इनके कन्वर्ट हो पारवा है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आम देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे काना हवा एंडोथर्मिक रिएक्शन रे काना हवा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले काना जे रिएक्शन रे एनर्जी रिलीज हेसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज हवा और एंथैल्पी रिलीज हवा डेलाज इज नेगेटिव। आउ एंडोथर्मिक बोले काना जेनो एनर्जी एब्जॉर्ब हवा एंडोथर्मिक रिएक्शन डेलाज इज पॉजिटिव है। तो तेल हम ग्राफ परमा सपोज दिस इज ग्राफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट है। यहाँ हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहाँ हूँ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी है। तो जदि एक्सोथर्मिक हो कण हवा इन हीट इवॉल्व हो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट यहाँ हूँ प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक काना है तार एक्टिवेशन एनर्जी तमने कम है एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक काना हवा उल्टा हो जावा। यहाँ हूँ एनर्जी यहाँ हूँ रिएक्शन प्रोग्रेस आउ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन this is for exothermic reaction and from this graph it is clear that energy of activation for endothermic is greater than of exothermic activation energy of endothermic reaction is greater than activation energy of exothermic reaction. Endothermic reaction heat is absorbing so it has higher A value than the exothermic. Endothermic reactions have higher A value. Suppose there is a reaction which is reversible A B and suppose the forward reaction is exothermic. So obviously the backward reaction will be endothermic. So for this reaction lesser activation energy will be required for forward reaction and more activation energy will be required for backward reaction. So this is all about the activation energy concept. Next we are going to discuss about what is the Arrhenius equation. Probably the last part of this chapter. Arrhenius equation. What is this equation? This equation gives the relationship between the absolute temperature and the rate constant.
Arrhenius developed a mathematical relationship between temperature and the rate constant on the basis of the observation from the large number of experiments. The temperature dependence of the rate constant K is expressed as follows. So gives the relationship between temperature, absolute temperature, and rate constant based upon various experiments. So the equation is as follows. Rate constant K of a reaction is equal to or proportional to, rate constant K is proportional to e to the power A by RT. K is the rate constant, K is the rate constant, K is the rate constant. K is the rate constant. E, the activation energy or the energy of activation. Activation energy. Activation energy. R, the universal gas constant. Universal gas constant. T, the absolute temperature. T, the absolute temperature. So this is the Arrhenius relationship. After simplifying, or K will be equal to e to the power minus A by RT, and here is a constant, that is A. A is a constant and it's called the frequency factor or Arrhenius constant. Frequency factor, better, frequency factor. Collision frequency, number of collisions per unit second, a factor, frequency factor. Okay, so this is equation 1, and equation 1 is the Arrhenius equation. And now applying logarithm ln to equation 1, ln K will be equal to ln A minus A by RT. Ln of this will be A by RT. That implies, or putting logarithm here, 2.303 log of K will be equal to 2.303 log A minus A by RT is equal to log A minus A by 2.303 R 1 by T. So this is the simplified equation of Arrhenius, or this is the simplified Arrhenius equation. Now, or just I am writing this equation in this way, log K is equal to minus A by 2.303 R 1 by T plus log A. This equation in the form as a straight line equation. So the equation is in the form of a straight line equation. Y is equal to mx plus c. So I am plotting a graph. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and here I am taking log K, and here I am taking 1 by T, and this is log K. So since this is a straight line equation, the plot must be a straight line, and since the slope is negative, the graph is like this. So the slope, this equation is in the form of y is equal to mx plus c.
So this is y, this is x, so m is the slope, this is the intercept. So here slope will be equal to minus a by 2.303 r, and intercept will be equal to log a. So this is the graph of 1 by t versus log k. Now suppose K1 is the rate constant at temperature T1 and K2 is the rate constant at temperature T2 for the same reaction. So the activation energy will be same and the other constants will also remain same. So for K1 at T1, the Arrhenius equation will be log K1 will be equal to minus A 2.303 r 1 by T1 plus log A, or at K2 at T2 the Arrhenius equation will be log K2 is equal to minus A by 2.303 r1 by T2 plus log A. Let us subtracting equation 1 from 2. We get log K2 minus log K1 will be equal to minus A 2.303 r1 by T2 plus log A minus or plus A by 2.303 r 1 by T1 minus log A. So log A gets cancelled. That is equal to minus of r plus A by 2.303 r 1 by T1 minus 1 by T2. That will be equal to A by 2.303 r in the denominator T1 T2 minus T1. So for implies log K2 minus K1 will be equal to log K2 by K1, and in the right hand side A by 2.303 r T2 minus T1 T2. So when for a reaction two different temperatures are given, so two different rate constants will be also available, and this will be the equation for the conditions, where two rate constants and two temperatures are given. So this is all about the Arrhenius equation.